Hi guys, welcome back to my channel. So today I'll show you all how I converted a mineral water bottle into a beautiful flower pot. So guys, let's get started. So guys, for this you'll need a 20-liter mineral water bottle. Actually, you'll need two bottles and you'll have to cut the upper part. As you can see the round, I'll show you. You have to cut that. तो गाइस आपको इसके लिए 20 लीटर वाली मिनरल वाटर बॉटल्स दो लगेंगी और आपको ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं उसे कट करना है. सो गाइस द अपर पार्ट, द राउंड अपर पार्ट, यू हैव टू कट दैट एज यू कैन सी इट इन द वीडियो आई एम शोइंग यू ऑल. So guys, after cutting it will look something like this. You have to cut two parts from the two bottles. One will be a little taller and the lower one will be a little short. So this will look something like this. You have to place it like that. And over here I've used a cone to hold those two parts together, tightly together. You can also stick that part with hot glue gun. I didn't have gun at the moment, so I used cone instead. Later on I'm going to stick that together and then after that you have to paint it. I've used a spray paint to paint it. तो गाइस आप ये दो पार्ट को ग्लू से, हॉट ग्लू गन से चिपका सकते हैं. मेरे पास उस टाइम पर नहीं थी तो मैंने कॉन लगाकर दोनों को स्टिक कर दिया टाइट से ताकि वो हिले नहीं. तो आप हॉट ग्लू गन से दोनों को चिपका सकते हैं. मैं बाद में उसे कर दूंगी. और फिर मैंने इसे पेंट कर दिया वाइट स्प्रे पेंट से. सो आफ्टर स्प्रे पेंटिंग इट लुक समथिंग लाइक दिस. गाइस पूरी पेंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा था. पेंट होने के बाद आप इसे सूखने दें, लेट इट ड्राई आफ्टर पेंटिंग इट. So guys, I've used petunia in this flower pot. Please ignore that flattened part guys. After this paint dries, I'll try to recover that part. तो गाइस आप ये पार्ट को इग्नोर करें, वो चिपटा हो चुका है. अगर ये पेंट सूख गया तो मैं उसे ठीक कर दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ब्यूटीफुल है. तो मैंने इसमें मिट्टी भरकर इसमें पिटूनिया लगा दिया है. आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं. आपको जो प्लांट अच्छी लगती है आप वो लगाइए. सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो आई हैव नॉट वाटर्ड दिस प्लांट, सो डोंट फॉरगेट टू वाटर दिस. तो गाइस प्लांट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है. मैंने इसमें पानी नहीं डाला, आप प्लीज़ इसमें पानी डाल दीजिएगा. तो गाइस पानी डालने के बाद ये प्लांट फिर से रिकवर हो गई और ये बहुत प्रिटी लग रहा है. आप देखिए. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे थम्स अप दीजिए. बाय गाइस.